नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं कि आप सब ने देखा होगा कि कैसे वो चेयरमैन, जिनको मैं सर कह के बुला रही थी, ही बिहेव लाइक अ रोड साइड गुंडा। जी हाँ, वो रोड साइड गुंडा का बिहेवियर तो आपने कैमरा पर देख लिया, मगर ही वॉज ऑब्वियसली हैविंग अ बायस्ड अप्रोच टूवर्ड्स मी। वो इसलिए क्योंकि ही ऑन कैमरा टोल्ड मी दैट आई कैन नॉट रिप्रेजेंट माई फादर, इवन दो माई फादर गेव मी अ प्रॉक्सी ऑन व्हाट्सएप, माई फादर्स लॉयर गेव मी अ प्रॉक्सी ऑन व्हाट्सएप। मगर वही चेयरमैन एक दूसरे फ्लैट ओनर के लड़के के साथ बात कर रहा था in that AGM meeting, and that footage I am showing it to you. ઓકે, હવે આ પોઈન્ટ પર બહુ હવે બધા બહુ વિક્રમભાઈ બહુ પોઈન્ટ છે. આ મૂકવામાં આવશે કે જેથી બીજા બધા મેમ્બરોને બી ખબર પડે. બેન, તમે રેકોર્ડિંગની ના પાડી છે. સર, મેડમ, પ્લીઝ રેકોર્ડિંગ. This is the same guy who lives on 9th floor. His father was also sitting in the AGM meeting, and this is the same guy जिसने कुछ दिन पहले जिम में संग्राम जी के सामने बोला था that I am a frustrated lady and Sangram should not have any relationship with me. He had also claimed that he knows a lot about my past. Well, lot of people know a lot about my past, Mr. So and so, because I am a public figure. चाहे मैं A grade हूँ या B grade हूँ, that is not the bone of contention. The thing that we need to understand here is that I am a public figure, so people know about my past. People who have been a part of my past will also bitch about me if they have not had great parting with me. So यहाँ पर आप बैठ के मेरे past के बारे में, मेरे को frustrated औरत मेरे fiancé को कहकर you are not earning great brownie points in front of him. मगर आपने obviously address किया chairman को in front of everybody when your father was sitting, and the chairman let you talk in that AGM meeting. जिस AGM meeting में मुझे बात करने से रोका गया because I was the daughter of my father, shows that society के अंदर there is a male chauvinism. जी हाँ, यहाँ पे औरतों को बोलने का हक नहीं होता. एक औरत बोली जो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर की बीवी थी, जिसमें थोड़ी भी अकल नहीं थी about figuring out what is right of privacy, and she obviously spoke that I cannot record her, but the fact is that she forgot that she was being recorded in a private recording by the society people also. So her recording was already happening in a camera which was happening by the society committee members. Also the meeting was happening in an open area which had cameras installed, that is CCTV installed. मगर उसके इंटेलेक्ट के ऊपर मुझे बात नहीं करनी, because it is really stupid to give tawajjuh to such people who make a mockery of their own education. She's supposed to be some professor. तो यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि the chairman used wrong means to stop me from speaking, because he made another son of a flat owner talk to him in that AGM meeting, and that recording I have showed you. So the chairman and the entire committee and does not want to interact with me. Sorry, that is your problem. You can leave this society. As it is, this society is illegally formed. You have given false affidavits to the district registrar's office. ये society, Sundarban Epitome Cooperative Housing Service Society, cannot coexist when Mahalakshmi Cooperative Housing Society is existing on the same land. So now the district registrar has to figure this out. Why Parag Shah submitted false affidavits, and those affidavits have been submitted at district registrar's office. इसके अलावा इतना कहना चाहती हूँ to all those people who charged towards me. Yes, there was some auntie whose age was similar to the age of my mother. आंटी जी, प्लीज हाथ जोड़कर कह रही हूँ, मेरी तरफ आगे से कभी मत आना. Don't charge towards me in future. आपका हाथ ऐसे मुट्ठी में बंद था. अगर आपकी तरफ से मेरे को एक उंगली भी लग गई होती ना, I would have booked you under physical assault and आप जेल में होती. I would have done that seriously. So never come towards me again. I'm telling you very respectfully. बाकी जो पुरुष थे, जो दो पुरुष थे जो लेफ्ट साइड पे थे, जिनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, एक था कोई डॉक्टर जयेश रावल. देखो, रोड साइड गुंडों की तरह मेरे ऊपर मत चिल्लाना. आगे से मैं आपकी फुटेज अपलोड करूंगी. अगर आप ऐसा करेंगे, यू कैन गेट अ कोर्ट ऑर्डर इफ यू वांट मी टू स्टॉप अपलोडिंग दैट फुटेज. मगर आप अगर मेरे सामने आएंगे और मुझे गुंडे की तरह थ्रेटन करेंगे, तो मैं वो फुटेज अपलोड करूंगी. जयेश रावल, who happens to be a doctor, even the chairman happens to be a doctor. Such doctors I have in this building, yeah, they are a shame to the profession. डॉक्टर कितना नोबल प्रोफेशन है, और आप लोग कैसे गुंडे जैसे हैं. The third person who was not wearing a mask in the white t-shirt, he's a treasurer's brother.
उसको मुझे इतना ही कहना है कि पहले तो मास्क पहनो, उसके बाद है ना अपना मुंह मत खोलो. यू डोंट नो व्हाट इज राइट टू प्राइवेसी, यू डोंट नो व्हाट इज पायरेसी, यू डोंट नो एनीथिंग. सो जस्ट कीप क्वाइट एंड ऑब्वियसली हैव अ हैप्पी फैमिली बिकॉज दैट्स द वे यू आर. आई डोंट वांट टू गेट पर्सनल हियर विद यू, बट डोंट ओपन योर माउथ बिकॉज यू डोंट हैव अ ब्रेन. और राइट में जो लोग मेरे तरफ चार्ज होते हुए आए थे वो एक 9th फ्लोर का आदमी था, साजक सिंघवी, दैट वाज हिज नेम. आई एम टेकिंग हिज नेम बिकॉज आई डोंट हैव हिज रिकॉर्डिंग बिकॉज अभी मैंने कैमरा बंद कर दिया था. I know him as Meenu's husband. I'm taking all the names on my video right now because you didn't want me to record you, but you wanted to insult me in that AGM in which I had the right to speak on behalf of my father. So I'm taking all your names. Meenu का husband जो right side से मुझे charge करते हुए आया, आगे से मेरे पास मत आना. आपकी रिकॉर्डिंग करके आपका नाम पुलिस को दूंगी और आपको जेल भिजवाऊंगी. इफ यू इवन come in 6 feet distance of mine because you have done this aggression behavior with me in front of my house, in front of my mother. Don't do it again. You did it again in the AGM meeting. Don't do it again. I'm telling you clearly on your face. Meenu का husband. आगे से मेरे पास मत आना, ठीक है? मैंने आपकी रिकॉर्डिंग नहीं रखी, मगर जो सोसाइटी की रिकॉर्डिंग हो रही थी ना उसमें आपकी फुटेज होगी. उसके साथ कोई और भी था जो मेरी तरफ आया. I don't remember because I was very confused with the way everybody charged towards me, which is not acceptable. You cannot charge towards me. समझ गए? पढ़े लिखे so called esteemed society members, you cannot charge towards me. Anyone comes towards me, I will record that footage and I will file a police complaint. If you even touch me like this much, you know, I will file a police complaint against you. Because don't do that. You have been checking my patience level for a lot of months, but now I am done. संग्राम जी ने अभी आपके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करी बिकॉज ही डजंट वांट टू गिव तवज्जो टू पीपल लाइक यू, बट दैट डज नॉट मीन यू कैन गेट अवे विद थ्रेटनिंग एंड इंटिमिडेटिंग मी. दैट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल. ओके, ठीक है? तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद. लेट्स फिगर आउट हाउ टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस इलीगल सोसाइटी.